transaction complete transaction when resolution of beginning of case event circularly formation of the marriage birth of first child birth of first child birth of last child complete execution birth of last child first child leaves home first child leaves home last child leaves home of parents complete last child has left home of parents first is called wife first is called wife death of survive of types of family nuclear family joint family generation family complex family communal family broken family problem family new family nuclear family joint family generation family complex family communal family broken family problem family and new family nuclear family consists of the married couple consists of the married couple it consists of the married couple it consists of the married couple and their children while they are still in order of nuclear family में क्या होता है कि married couple होते हैं और उनके बच्चे होते हैं जिसके बच्चे जो है independent the husband usually plays a dominant role in the household husband है usually plays your husband usually plays a dominant role in the household जो husband है वो dominant role play करता है घर में joint family it consists of number of married couples and their children who lives together in the same household all males are related by blood while females are wives daughter sisters and widows property is held in common there is a common family purse on which all expenditures are met एक कॉमन फैमिली पर्स होता है जहाँ से सारा खर्चा जो है चलता है ऑल अथॉरिटीज वेस्टेड इन द सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली जितनी पूरी अथॉरिटी कहाँ रहती है सीनियर मेल मेंबर के पास फैमिलियल रिलेशंस एंजॉय प्राइमेसी ओवर मैरिटल रिलेशंस थ्री जनरेशन फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ हाउस होल्ड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री जनरेशन इसमें 3 जनरेशन होती हैं complex family it is a genetic term for any family structure involving more than 2 adults sorry more than 2 adults होते हैं communal family it is a family where all of its members are playing a part in its management communal family वो होती है जहाँ जितने भी members हैं सबके सब मैनेजमेंट में पार्ट when both parents have separated or where death has occurred of one of both two parents यहाँ एक या दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है प्रॉब्लम फैमिली फैमिली which left behind the rest of the family less than 10 years of duration consists of parents and children the major social functions of the family is to provide functions क्या होता है सबसे पहले residence provide करना one of the major social functions of the family is to provide a clean and decent home to its members clean and decent home members को घर provide करना two types of residence patrilocal matrilocal मैट्री लोकल होता है जहाँ वाइफ जो है हस्बैंड के घर पे जाती है मैट्री लोकल हस्बैंड गोज टू लिव इन द हाउस और जहाँ हस्बैंड जो है वाइफ के घर पे जाता है मैट्री लोकल डिवीजन ऑफ लेबर द मेल हैड द सोल ड्यूटी टू अर्न अ लिविंग एंड सपोर्ट द फैमिली फीमेल हैड द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डे टू डे केयर ऑफ चिल्ड्रन रनिंग ऑफ द हाउस अच्छा यहाँ जो मेल है वो फैमिली के लिए अर्न करके लाता है और सपोर्ट करता है फैमिली को फीमेल जो है फीमेल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डे टू पूरे दिन से दिन की केयर चिल्ड्रन की and running of the household. In industrialized and urbanized communities, there is less marked distinction between the functions of man and women.
अच्छा, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत कम उनमें डिफरेंस होता है मैन और वेमेन के काम का. Reproduction and bringing up of children. The mother takes absolute care of the infant and children up to a certain age. The father provides for education and teaches the child the social traditions and customs. अच्छा, मदर जो है एक सर्टेन एज तक बच्चों की केयर करती है. फादर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराता है and teaches the child the social tradition and customs. Socializing. The family is a bridge between generation and फैमिली एक ब्रिज होती है जनरेशन के बीच में एंड बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में. इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप एंड और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी और कंट्रोल बाय द फैमिली. सोशल केयर. द फैमिली प्रोवाइड सोशल केयर बाय गिविंग इन सोसाइटी प्रोटेक्टिंग इट्स मेंबर्स फ्रॉम इंसल्ट marital duty, regulating sex relations etc. फैमिली का रोल क्या है हेल्थ और डिजीज में? हेल्थ परसेप्शन, हाउसिंग कंडीशन, पर्सनल हाइजीन, चाइल्ड रियरिंग, सोशलाइजेशन, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन. हेल्थ परसेप्शन क्या होता है? A traditional Indian family perceives health as divine benevolence and disease as curse or punishment of God. Disease as curse or punishment of God and health as divine benevolence. Diseases are considered due to evil eye, impurities of blood, breach of taboo. Okay. Housing condition. A poor housing conditions with ill ventilation and ill lighted rooms often associated with overcrowding and with livestock animals with lack of drainage facilities. हाउस की कंडीशन सही नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी. ओवर हाउसिंग कंडीशन होगी तो और इल वेंटिलेशन होगा, प्रॉपर लाइट नहीं होगी रूम में तो ओवर क्राउडिंग होगी विद उससे क्या होगा हेल्थ पर असर पड़ेगा. एयर बॉर्न इन्फेक्शन एंड व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन होंगे. पर्सनल हाइजीन. हेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक अप्लाइंग टर्मरिक ऑन स्किन, ऑयल मसाज, ब्रशिंग विद नीम टेप एक्सेट्रा. अनहेल्दी प्रैक्टिसेस लाइक च्यूइंग पान, केयर ऑफ डिपेंडेंट एडल्ट्स. केयर ऑफ डिपेंडेंट एडल्ट्स की केयर करना. केयर ऑफ वीमेन, केयर ऑफ सिक और इंजर्ड, केयर ऑफ वीमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, केयर ऑफ द एज्ड, केयर ऑफ द हैंडीकैप्ड. सिक और इंजर्ड, केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी एंड चाइल्ड बर्थ, बूढ़े हो गए उनकी केयर और हैंडीकैप्ड. Stabilization of adult personality. The family provides an opportunity both for adults and children for release of tension. फैमिली जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए जिससे टेंशन रिलीज होती है सो दैट इंडिविजुअल कैन अटेन मेंटल इक्विलिब्रियम एंड strive to maintain a stable relationship with other people. Familial susceptibility to diseases. The members of a family share a pool of genes and a common environment.
These decide the susceptibility to disease. Health perception, housing condition, personal hygiene, child rearing, socialization, personality formation, care of dependent adults, care of dependent adults, care of dependent adults, broken family, problem families, dietary practices, disposal. Added on cultural factors in health and disease, concept of etiology and cure. Added on cultural factors, कौन से cultural factors हैं जो health और disease पर. Concept of etiology and cure, environmental sanitation, food habit, mother and child health, personal hygiene, sex and marriage. Concept of etiology and cure. The cause of disease, as understood by the majority of rural people, fall into two groups: supernatural and physical. जो रूरल पीपल हैं वो क्या सोचते हैं कि डिजीज क्यों हुई, दो ग्रुप्स में डालते हैं, सुपरनेचुरल एंड फिजिकल. सुपरनेचुरल कॉज क्या है? रेट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, छोटी माता. ब्रीच ऑफ टैबू, पास्ट सिंस, इविल आइज, स्पिरिट ऑफ घोस्ट इंस्टीट्यूशन. ठीक है. रेट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, चिकन पॉक्स, छोटी माता से बोलते हैं हम छोटी माता. ब्रीच ऑफ टैबू, पास्ट सिंस, पुराने पाप मतलब, evil is spiritual ghost intrusion. And spiritual ghost. Physical is the effect of weather का effect. जैसे हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक मतलब लू. हीट स्ट्रोक का मतलब है लू. जैसे वाटर, impure blood, skin disease such as boils and scabies are considered to be due to impure blood. जो स्किन डिजीजेस हैं जैसे स्केबीज और बॉयल्स, ये क्यों होता है? मतलब ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये जो है इम्प्योर ब्लड की वजह से हो रहा है. एनवायरमेंटल सैनिटेशन, फूड हैबिट, मैटरनल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, पर्सनल हाइजीन, सेक्स एंड मैरिज. एनवायरमेंटल सैनिटेशन, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. सबसे इसमें आता है पहले डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, water supply, housing, use. Large percentage of people in rural areas use open field for defecation. Okay. रूरल एरियाज में जो पीपल हैं वो डेफिकेशन के लिए ओपन फील्ड यूज़ करते हैं. ठीक है. डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट यानी कि is invariably thrown in front of the houses where it is permitted to accumulate and decompose. घर के बाहर फेंकते हैं वो. वाटर सप्लाई, टैंक्स एंड पॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड समटाइम्स इवन एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. Housing. Rural houses are practically the same all over the country. They are usually easily damageable and damp, ill-lighted and ill-ventilated. जो रूरल हाउसेज हैं वो easily damaged होता है, डैम्प एंड इल, प्रॉपर लाइट में होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड में होता है. फूड हैबिट क्या है? द डाइट ऑफ द पीपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल कंडीशंस, soil, climate,
Religious customs and beliefs. Alcohol drinks are tabooed by Muslims and high caste Hindus. Good. गुड में आता है ब्रेस्ट फीडिंग ऑयल मसाज ऑयल breast feeding, oil bath, massage, and exposure to sun. Bad branding of the skin, administration of opium, drastic purgatives are all bad customs. Unimportant क्या होता है? Punching the area and nose. Application of oil or a paste of turmeric on the anterior fontanelle. Personal hygiene, oral hygiene. Many people in the countryside use twigs of neem tree as a toothbrush. Some use ashes. Bathing naked is a taboo. The women after menstruation must have a purifying bath. Shavings done by the traditional barber. नाई वाई के साथ समझ गई. For certain religious groups, menstruation is a time of uncleanliness when women are forbidden to pray or have intercourse. Marriage is a sacred institution. There are differences in marriages paid by caste. Female of depressed classes have lower mean age at marriage. Doctor-patient. A doctor must know how to communicate with his patient. A successful doctor is one who knows how well to communicate with his patient. In this regard, 3 levels of communication have been described. Communications. 3 levels of communications. Communication on an emotional plane, communication on a cultural plane, communication on an intellectual plane. Emotional plane, cultural plane, intellectual plane. Emotional, cultural, intellectual. Doctor must give a sympathetic ear to the complaints made by the patient and his relatives. Okay. The reason why folk medicine is successful is because the patient and his relatives feel they can talk more freely to a folk medical practitioner than with the modern physician. To be successful, the modern doctor should couch his scientific advice in terms which fit an already existing cultural pattern. A mere statement to a patient that the medicine is hot and will help to cure a cold disease may make or increase confidence. Communication on an intellectual plane. There is a wide gap between the intellectual level of the practitioner and modern medicine and the illiterate masses. A successful doctor is one who reduces the social distance and is able to communicate with his patient freely and gains his confidence. The most important component of doctor-patient communication is humor. Social problems and social problem. When individual problem affects large number of people, they become social problem. अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम बहुत सारे पीपल को अफेक्ट कर रहा है तो एक सोशल प्रॉब्लम बन जाती है. लाइक prostitution. Immortal Traffic Prevention Act covers males or females who are exploited sexually or commercially. Immortal Traffic Prevention Act. Immortal Traffic Prevention Act. Immortal
Traffic Prevention Act. A Motor Traffic Prevention Act covers male and female, male or female जो sexually or commercially exploit होते हैं. Delinquency, committed an offense, theft, sexual offense, murder. Dowry system. Dowry Prohibition Act 1986. Minimum punishment of 5 years imprisonment and a fine of ₹15,000. Dowry Prohibition Act 1986. Maximum punishment is 5 years or imprisonment. और फाइन कितना लगता है? 15,000. Alcohol abuse causes crime, neglecting family, road accidents, etc. 7 main categories: blind, hearing ability. Handicap में 7 main categories: blind, सुनाई नहीं दे रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं. ऑर्थो, medically handicapped, leprosy affected, mentally retarded, mental illness, speech disability, बोलने पाउला. Drug addiction. Reasons are curiosity, disturbed home, escape phenomena, etc. Curiosity होती है शुरू में, ठीक है, और disturbed home, escape phenomena. Social problems are solved by social welfare program and social legislation. Study of relationship between disease and social condition or social disorganization. Social pathology क्या है? डिजीज और सोशल कंडीशन मतलब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के बीच का रिलेशनशिप की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? सोशल पैथोलॉजी. स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम विच कॉजेज डिजीज इन अ पॉपुलेशन. सोशल प्रॉब्लम स्टडी अंडर सोशल पैथोलॉजी. सोशल कंस्ट्रेंट्स, सोशल लेवल्स, सोशल डेविएंस. सोशल कंस्ट्रेंट्स में आते हैं इलिटरेसी, पॉवर्टी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस. एवल्स में आते हैं स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जेंडर वाइज, चाइल्ड नेग्लेक्ट. Is uncovered by social surveys. What right about social control? In every society, there are rules, formal and informal, for the maintenance of relationship of authority and subordination. ठीक है, हर सोसाइटी में रूल्स होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल किस चीज़ के लिए? अथॉरिटी और सबऑर्डिनेशन के बीच में उनका मेंटेन करने के लिए. द लॉज एंड एनैक्टमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट आर सोशल कंट्रोल. लॉज एंड एनैक्टमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट. In the field of health, there are various acts, some central and others state or local, which help to maintain the standards of health. Even in small organizations, there are sets of formal rules and regulations which control the behavior of individuals to perform different roles.
pupils of low IQ can be taken aside for special education. जिनका लो IQ होता है वो उनको स्पेशल एजुकेशन के लिए जाता है. Those of very high capacity can be selected for education in keeping with their capacity. As an aid in the determination of the right time to enter school and maintaining the adjustment of a pupil to his work. The selection of applicants for college and professional schools for education guidance, the use of IQ test tools. Therapist. Medical social worker. The medical social worker is a paramedical worker who has been trained in social case work and in the art of interviewing people. Who has been trained in social case work and in the art of interviewing people. मेडिकल सोशल वर्कर जो है पैरामेडिकल वर्कर होते हैं. Who has been trained in social case work institution where he is employed जहाँ वो काम करता है and the community. The principal work of medical social worker is to visit the family and probe into the personal, economic and social causes of illness and collect social history of the patient with a view to supplement the medical history. Socioeconomic status classification. It is a method to stratify the population depending on the education occupation. Population. The method is stratify the population depending on education, occupation and income. Education, occupation and income mostly. Importance of socio-economic status in relation to public health. एक लो सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस होता है, हाई. लो में क्या जैसे डिजीज लाइक माल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस ये प्रिवेलेंट होती है. हायर में क्या होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर, ओबेसिटी. लो सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस में क्या क्या होती है, जैसे बीमारी हो गई, माल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी, रेस्पिरेटरी डिजीज ये प्रिवेलेंट होती है. और हायर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर, ओबेसिटी. ये क्लासिफिकेशन. There are many methods of assessing socio-economic status, namely BG Prasad method, Kappaswamy method. BG Prasad, Kappaswamy method. Urban scale और rural scale. Urban scale BG Prasad, Srivastava scale. Modified Kappaswamy scale, Kurukshetra scale, Jalala scale. BG Prasad scale, Srivastava scale, modified Kappaswamy scale, Kurukshetra scale, Jalala scale. BG Prasad, Srivastava, modified Kappaswamy. BG Prasad. Kappaswamy स्कूल अर्बन फैमिली के लिए. अर्बन Kappaswamy, BG Prasad. इसमें 3 पैरामीटर होते हैं. एजुकेशनल स्टेटस ऑफ हेड ऑफ द फैमिली कि हेड ऑफ द फैमिली उसके लिए स्कोर होता है 1 to 7. ऑक्यूपेशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली स्कोर होता है 1 to 10. टोटल पर कैपिटा फैमिली इनकम पर मंथ स्कोर होता है 1 to 12. स्कोर 1 to 7. ऑक्यूपेशन हेड ऑफ द फैमिली होता है 1 to 10. एजुकेशन का स्कोर है 1 to 7 और ऑक्यूपेशन 1 to 10.
टोटल पर कैपिटा फैमिली इनकम पर मंथ, स्कोर 1 to 12। इसमें हम स्कोर देखते हैं। बीजी प्रसाद स्केल फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल फैमिलीज। बीजी प्रसाद दोनों के लिए होता है बेस्ड ऑन पर कैपिटा मंथली इनकम। रूरल स्केल रूरल फैमिलीज का नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। इनकम पे डिपेंड करता है बाकी सब पे, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, कास्ट, फैमिली मेम्बर, सोशल लैंड, हाउस। इसमें 9 पैरामीटर होता है। कॉर्पस में 3। कौन कौन आता है जो पर कैपिटा कैलोरी इनटेक इसकी लेस देन 24 किलो कैलोरी पर डे रूरल एरिया में। इनकम लेस देन 32 पर डे है। अर्बन में 2100, यहाँ 2400, 2100, 32, 47, 2400, ठीक है, 2100, 32, 47। कैलोरी इनटेक है 2400, 2100, इधर 32, 47। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI was first produced in 2006, aimed to comprehensively measure and track hunger at globally, regionally और country level पर। global, regional, country level। It highlights successes and failures in hunger reduction। ये सक्सेस और फेलियर को हाईलाइट करता है। It is calculated on the basis of 3 indicators: undernourishment, child underweight, child। 3 indicators होते हैं: undernourishment, child underweight, child mortality। undernourishment, child underweight और child mortality। Proportion of undernourished population, children underweight, children mortality in percentage divided by 3। underweight undernourished population का proportion, underweight और mortality percentage divided by 3। हिडन हंगर मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये अंडर न्यूट्रिशन की फॉर्म है जो कब होती है, वह इनटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ आइटम्स एंड मिनरल्स बहुत कम होता है। और पुअर डाइट, डिजीज अवे, increase micronutrients during certain life stages such as pregnancy or lactation. Its effects can be devastating, leading to mental impairment, overhealth, low productivity and mental health। mental impairment हो जाता है, overhealth और low productivity और death भी हो सकती है। low productivity और death। इसमें जो है जो डेथ है शुरू के 1 दिन में जो होती है चाइल्ड की लाइफ में, कंसेप्शन से 2 साल तक। 364 कितना होगा? 600 700। Regarding serious physical or cognitive consequences. Social security. It is defined as security which society furnishes through appropriate organization.
security that society furnishes through appropriate organization. Security that society furnishes through appropriate organization किसी सर्टेन रिस्क के अगेंस्ट जिससे जो मेंबर हैं सोसाइटी के कम्युनिटी के वो एक्सपोज हैं. द रिस्क विच सोशल सिक्योरिटी कवर इन मोस्ट कंट्री आर sickness, invalidity, maternity, old age, death. Sickness, invalidity, maternity, old age और death. 3 टाइप्स हैं इसके. इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए. इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923. वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट. वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923. सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. Working Compensation Act होता है इसमें एक. सेंट्रल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. जो एम्प्लॉय हैं स्टेट के उनको. फैमिली पेंशन स्कीम. Citizen, the employees of state and central have pension, gratuity, PF, family pension schemes. पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ एंड फैमिली पेंशन स्कीम. जनरल पब्लिक के लिए लाइफ इंश्योरेंस. कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज मैनी स्कीम्स फॉर द जनरल पब्लिक.